मेरा एक ओपिनियन है, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना दो मुख्तलिफ बातें। मैंने अपने मैनेज तो एक्सेल शीट है, एवरीथिंग आई हैव इज नोन टू माई वाइफ एंड एवरीथिंग शी वाइस वर्सा, because I think वो जो लोग छुपाने का culture very uncommon in South Asia. I remember one of your videos where you spoke about compounding, yes, है ना? और compounding सिर्फ again you must have seen that compounding सिर्फ पैसों में नहीं होती, compounding आपके experience में भी होती है। हाँ? जैसे जैसे आपका टाइम गुजरा होता है वैसे वैसे अगर आप उसी चीज को leverage कर रहे हैं तो आपका improvement आती है। Absolutely यार, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कोई 2009-10 में कोई 30 लाख रुपए से। Now it's worth 1,000 times more than what we started. It is with compounding। जो मुझे प्रॉफिट आता था मैं उसी बिजनेस में डालता था। हमने कोई बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी जब खरीद सकते थे, अभी भी नहीं करते, but we always invested back and somehow it gave us dividends। उसी वजह से मैंने अपने different divisions खोले since and it became success। decision making आप कर लें, quick decision making, वो एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर ना। हाँ, मिलिट्री के साथ काम कर चुका हूँ, मिलिट्री के लिए काम कर चुका हूँ, मिलिट्री के साथ काम कर चुका हूँ, उनके लिए अभी भी शायद किसी कैपेसिटी में कर रहे हैं, यू नो, इन जर्नलिज्म एंड इन बिजनेस। हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा मसला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकनॉमी के लिए, वी आर लिविंग विद अ फेल्ड स्टेट which is अफगानिस्तान। मिडल ईस्ट में देखा जाए, you know, पाकिस्तानी मीट is amazing, but we only have one stock listed company, पाकिस्तान मीट कंपनी, शहीर के नाम से थी मेरे शहीर। अब मेरा एक वियतनामी एक दोस्त था, उसने मुझे 40,000 गोट्स का ऑर्डर दिया। मैंने कहा चलो मैंने उसकी वीडियो दिखाई, वो पागल हो गया देख के कि इतना अच्छा है, लेकिन जब उन्हें ऑर्डर दिया वो कहते हैं अच्छा जी कर लेंगे। मैंने कहा एनिमल्स भी हम ला के दे देते हैं। I've always been tech savvy to start with, as I've told you, since I had that financial sense somehow. It helped me in journalism. Data was big part of everything. So I've always say, you know, data helps you make the right decision. Friday Times came to Raza Rumi, Najam Sethi और एक हमारी बहुत अच्छी टीम बनी from 2011 onwards, और we wrote, you know, hundreds and articles। उसके बाद US का एक military.com होता था, which was official US military news network। मेरे साथ आज अली चिश्ती साहब मौजूद हैं। इनको मैं ऑलमोस्ट 10 साल से मैं इनको जानता हूँ, और जो इनकी जर्नी रही है, मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था जब इनसे पहली दफ़ा मैं मिला था। 10 साल से मैं जानता तो हूँ, लेकिन पहली दफ़ा मुलाकात मेरी 1 हफ्ते पहले हुई है। अली भाई कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक है, big fan of yours as well। Really? I've been watching your videos for quite some time। Thanks a lot। It is an honor। I think पाकिस्तान में कम लोग हैं जो कि बल्कि आई थिंक साउथ एशिया में जो टॉक्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस। ऑफ कोर्स साउथ एशिया में इंडिया ऑफ कोर्स है बहुत आगे हमसे, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड देन जीसीसी कंट्रीज के अंदर बहुत कम लोग बात करते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताएं, पहली बात आप मेरी आपसे इंट्रोडक्शन तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तो कुछ बताएं अपने बारे में कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी, so I was born and bred in Nazimabad, really? Karachi। Karachi is love, Nazimabad is super love, and उसके बाद जो है हम लोग फिर कराची में ही पले, वहीं सेंट पीटर से स्कूलिंग हुई। My father was a professor in Karachi University, so we moved inside Karachi University at a great time, and then I went to England, और फिर वहाँ से अगर आप कहते हैं, used to be a place called chalk.com, and which was a dashboard, so where everybody from India, Pakistan, or people living abroad used to contribute, and that's where I started my journalism or my journey of writing things. I've always been interested in politics and geopolitics, and I think my grandfather was behind it, because he had an eyesight problem, so he told me to read newspapers for him। और वहाँ से start हुआ interest और बना। हमारा घर भी बहुत open था, we lived, everybody was professionals, but very very liberal, और tolerance थी कि एक we could discuss anything about even religious topics to politics, we was openly discussed and tolerated within our home। तो I grew up with very liberal ideas चीज़ों पे in Karachi। और फिर उसके बाद so I've been very active since 98 to 2001 and 2004, but when I came back to Pakistan, I think in 2008 onwards, I started 8-9 daily times। Salman so chalk.com was while you were in the UK, or आप? जी, UK and Pakistan, and
and was very active. उस ज़माने में कुछ था नहीं. Hangout place for people के थोड़ा सा उस ज़माने में blogs नहीं आते थे. It started as so we started और उससे पहले कराची में MIRC होता था. अगर आपको IRC याद हो, we used to have ASL and you know a lot of other things, but so we created वहाँ Delnet और Undernet होता था, right? And उसमें बहुत शैतानियाँ भी की. But it somehow you know shaped us, people who grew up in 90s or late 90s, to where we are today. Chalk was a big part of our lives. Then the blogging culture started, and I was given the best blogger, political blogger award twice. In Pakistan actively. Being in Karachi, you know, I had a tilt towards MQM, which is very open at that time, but not with the political struggle, but because of certain discriminations and average Karachiite faced. So obviously, I had always been an advocate. So so it became part of it, and obviously then we go into journalism. My topics were national security and counterterrorism. And your education was from Pakistan, like कुछ भी bachelor's नहीं किया था आपने? नहीं हाँ जी UK से किया. UK से right, and then we came back to Pakistan for this. So what was your majors in law? Right, अच्छा okay. तो वहीं से start totally different subjects, So but it's related, but I read a lot, and this is how it became a thing. Okay, and then chalk.com प्रोफेशनल. आप पाकिस्तान आने के बाद प्रोफेशनल कोई जॉब की आपने, या हमेशा से कोई फ्रीलांसिंग टाइप की ही काम? I've never so in UK I was I'll tell you because it's a finance related channel and everything. Yes. So in UK while studying, I had some money, and what we grew up in Birmingham. तो वहाँ पे खाली जगह लेते थे हम, and we used to develop stores, and you know so I always had a nick for business. Although I'm the first businessman from the family too. They're all service professionals. But तो हम लोग खाली जगह लेते थे, you know, उस ज़माने में Iraq and US war हुई थी, a lot of Iraqis and we saw Kurdish coming to UK to buy businesses. So we used to develop a store or a restaurant. Okay. Run it for 3 months and you know sell it for a goodwill. We sold 21 stores in 2 years. Okay. And so when was that? This was from 2004 to 2006. So आप रहते हुए वहाँ पर आपने ये काम किया, तो उस वक्त आप स्टूडेंट होंगे? I was a student and earning a lot of money. Really? Yeah. Okay. और फिर you know at that stage when you were thinking, I want to tell on a personal note that you know when you earn that money and in early age you think जब आप पैसा कमा रहे होते हो, family कुछ नहीं है और दोस्त सब कुछ है. And my business partner ditched me because everything was on his name, and he ran away with money, and you realize कि business में paperwork कितना important है. Exactly. And apparently, but I made more money than you lost. What I lost, but I learned a very important lesson in life, that how paperwork is important in business, and how you know we should involve lawyers and everything. We should some sort of paperwork is very important. Right. अच्छा, तो ये फिर आप पैसे वैसे वहाँ बना रहे थे, and then you moved back to Pakistan. कोई reason था या आपको वैसे ही? No, I just came back. Came back, and उस वक्त so I've always been an activist. Wanted to come and change. Yes, I could like मुझे याद पड़ रहा है जो मैं I think I have seen you on Twitter. I've seen you on back in the days. I've seen you on Twitter and then Facebook as well. Yeah, I've been very active on all forums in Pakistan. वो किसी भी एक normal पाकिस्तानी की जैसे childhood में transition from Commodore to Atari to a Nintendo, a Sega हुई, ऐसी हमारी भी evolution. You know, it has to be MIRC, then you know to different dashboards, and then Orchid came. Orchid, अगर आपको याद 2008 में it was a thing in 2007-8. 7-8 or ICQ होता था, and you know had an MSN messengers. Yes. And that's how technology changed, and then came Twitter, right? And Twitter, I still remember the power of Twitter. के I was never on Twitter. जैसे अब शायद आज हम जिस नजरिए से लेट्स से स्नैपचैट को देखते हैं, नहीं जिस नजरिए से शायद हम और भी टिकटॉक को देखते हैं, उस जमाने में हम ट्विटर को देखते थे. बट यू नो आई थिंक अवाब अलवी एंड अली रजा आब्दी
were the ones who somehow forced us into it. Although अब आपसे बिल्कुल नजरियात different थे, but we had a good talk. Abab Alvi. Yeah. Okay. And Ali Raza Abdi Shaheed from MQM. Yes. Yeah. So and Twitter, somehow I fall in love with Twitter, and and became a big thing on Twitter, and that's how it helped me in journalism. But before Twitter, I was associated with Daily Times with Salman Taseer. Okay. I was the national security correspondent. Okay. उसके बाद फिर Friday Times आया. Salman Taseer was tragically, as you know, was murdered, and there were financial issues with Daily Times. But finance part I was never part, but Daily Times, but writing and storytelling had always been a passion more than profession. So I always thought, to subsidize my life, journalism, या आप कुछ लिख रहे हो तो I've seen what other people have suffered financially. I always thought you should have something on the side as well. So I opened up an IT company in 2009-10. Okay. And while doing the journalism. और फिर Friday Times came तो रज़ा रूमी, नजम सेठी और एक हमारी बहुत अच्छी टीम बनी from 2011 onwards, और we wrote hundreds and articles. उसके बाद US का एक military.com होता था, which was official US military news network. They hired me in Pakistan. So I started writing for Tehelka India, Indian Express, the Foreign Policy magazine. So you must have got a lot of writings. Like if मैं थोड़ा सा link में लगा दूँ description में, तो आपके काफी ज़्यादा वो मिल जाएंगे. Of course, yeah. And मेरा ख्याल से हम बच गए जिंदा तो बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान में उतना खुला अगर आज लिखें तो I don't think we'll survive. I think we thought के at that time they're repressive, but right now unfortunately the space for free speech has gone down in Pakistan. But but again, I think that was a very dangerous time to live in. Growing up in Karachi saw that violent streak. अगर आप देखें 2007 के आखिर में और 8 से लेके 2013 में 30,000 people were killed in Karachi, and 30,000, and with a prosecution rate of less than 0.2%. It was a jungle. It was ethnic wars. It was at that time the religion, sectarianism started, mainstream. You saw Shia killings, अगर मैं कह सकूँ आपके channel पे, or you saw minority killings in Pakistan, or pinched, attacked by, because हमने फाटा में operation start किया था. All that came to Karachi in urban areas, and we saw that urban terrorism. So we saw Lal Masjid and everything. So at that time, when you are a journalist, on Twitter, I remember getting a direct threat from the TTP spokesman because I was very liberal. And that was in 2011, probably 10-11, तो सबसे ज़्यादा 12-13 पे, और ये बहुत ही तो वो तो नाम लेके करते थे. फिर Twitter helped me in journalism, and journalism helped me on Twitter, so it became a big thing. अच्छा अली भाई, नॉर्मली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत नंबर्स उनको फिंगर टिप्स पे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेटा आपका फिंगर टिप्स पे होना तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई मैकेनिज्म भी रखना चाहिए, आपका डेटाबेस होना चाहिए. प्रॉब्ली यू मस्ट हैव वर्क लाइक दिस, बिकॉज क्योंकि आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि, और आप जिस तरह से बात करते हैं, काम करते हैं, मुझे लगता है कि आपका कुछ process इस तरह का होगा. तो I've always been tech savvy to start with, as I've told you. Since I had that financial sense, somehow it helped me in journalism. Or data was is a big part of everything. So I've always say data helps you make the right decisions in everything. So as a journalist too, I had an assistant who actually kept track of the data. So अगर आप South Asian terrorism portal देखें, yes, I have used its data because मैं पहले blogs लिखता था कभी-कभी, तो I use this portal a lot. So we helped gather that data for them. In that thing, or from उस वक्त क्योंकि statistics, so I used to sell that data. Of course, I knew that
data sells since 2007, 2008. And so we used to sell that data, and you obviously used it to analyze what was happening. So the graphs actually tells you, what would happen and what happened. It tells us the past, present, and the future. It could predict future, right? Well, yes. And we use a lot of other tools which helped us, क्योंकि मेरा काम काउंटर टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी साइड पे ज़्यादा रहा, तो इवन हमारे पास इतना डाटा था कि हम एनालाइज करें कि कौन सी एथनिसिटी इज बिन यूज्ड, और कौन सा एरिया में क्राइम से लेके. आई हेल्प कराची पुलिस, कराची रेंजर्स in providing data at that time. Shahid Hayat, that he used a lot of my data. He was IGP, I guess. IGP, and became a FIA director later. Worked very closely with him in that sense. So data helps you with everything, yes, right? Yes. And importance of data, जिसने realize नहीं किया, I think he left behind in your life, not just in journalism, but data helps you makes the right decisions. तो उसी का पार्ट था. आपने अच्छी बात है कि जर्नलिज्म में मोनेटाइज लोग करते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन आपने डिफरेंट तरीके से की, क्योंकि लोग तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन करते हैं. लेट्स से उस वक्त तो यूट्यूब चैनल भी नहीं थे ना कि लोग आ जाएं, तो लोग प्रॉबली ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे होते हैं एज अ जर्नलिस्ट, विच इज कंप्लीटली, आई वुड से कि गलत है, बिल्कुल अनएथिकल है. लेकिन आपने उसको दूसरी तरफ से लेके गए उसको, और आपने अपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनी थी उसके बारे में बताया. We should understand one thing. और मेरे ऊपर बहुत बड़ी तनकीद भी हुई उस जमाने में, क्योंकि I was very young and doing things which senior journalists didn't do, because they didn't understand the power of blogging at that time, or data analytics in 2007 and 2008-9. So to them it was gimmicks at that time. So people laughed at me, of course. So, but what is journalism? Journalism is selling your information, right? Is selling information, showing off information. So obviously at that time, social media helped us a lot. Social media helps intelligence agencies a lot today, but social media helped journalism a lot, कि हमें जो sources जो थी वो हमें ट्विटर पे मिल जाती थी, फेसबुक पे मिल जाती थी. जो आपसे inaccessible लोग थे उस जमाने में, इतने सेवी नहीं थे, तो we got in touch with them. प्रोफाइल के अंदर तक घुस सकते थे, घुस सकते थे, and we became friends. I think Facebook helped me made hundreds of sources. Twitter helped me with thousands of leads to work with. उसमें गलतियां भी की. Obviously when you come young and you don't repeat your mistakes in life, that's the part, but you make mistakes. जो काम करते हैं उन्हीं से गलतियां होती हैं, right? But the important part is you don't repeat those mistakes, and that would be criminal, right? So we did that. I formed a company called Amtac, and different company which was probably one of the leading video conferencing provider at that time. Okay. Because it helped. So how did this transition come? Like आप journalism कर रहे हैं और फिर एक company tech खोलते हैं और उसके अंदर वो भी एक video conferencing company कुछ. Yeah, so I was never a tech, but I was a tech savvy guy. But obviously with business I had some obviously finances and everything. But so I had an opportunity. Balki it's a very interesting story. I had an opportunity where where I went to a company which was its owners have ran away, और उन्हें जो है, अगर मैं नाम लूँगा, एटलस ग्रुप एक है पाकिस्तान में, तो उनसे उन्होंने एडवांस पैसे लिए हुए थे, कोई 7 मिलियन, और 8 मिलियन का ऑर्डर था. अच्छा. और कोई उसमें 10-12 लोग काम करते थे, तो आई पेड फ्रॉम माई पॉकेट 7 मिलियन to just fulfill that order, and Atlas helped me a lot after that, because I saved a lot of people's jobs at that time. Right. चीज़ों में, and I had a nick of nick for business, and somehow it clicked. At that time video conferencing was a luxury. New thing, right. A luxury, and I was always good in marketing and information, so it somehow clicked. And when you start making profits, you invest in it. Business में भी गलतियाँ की, but you learn from it, right? And up till now it's my primary source of income. You're right. That business. And we obviously I diversified into farming, restaurants bhi khole, but I've realized one thing in business is that if you're good in information technology, you should open new doors
of related or value-added service instead into venturing into something unknown, like restaurant. We had a very bad experiences. An experience primarily not because of what we are not cooks. A, B, of labor. So the labor sort of we cannot handle that sort of labor in Pakistan, or something into farming, which is very profitable, of course. But apparently, that physical work in farming is you have to be there. You have to be there in sort of business, but it's a profitable business. It's something But हमें ये कभी दुख नहीं रहेगा कि हमने try नहीं किया. But sold off these businesses in profits, alhamdulillah. But thing is, it's not a cup of tea. So I've in that scenario I've learned that यार जिस जो आपका बिजनेस है उसी में इन्वेस्ट करें, उसमें वैल्यू एडिशन करें. इफ यू आर सेलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओपन अ router switching business or a digital agency or something related or aligned to that business where you have इसमें एक तो expenses limited रहते हैं मेरे ख्याल से. बिल्कुल. You have the same infrastructure, same office. उसी को leverage कर रहे होते हैं. उसी को leverage कर रहे होते हैं. बिल्कुल. I remember one of your videos where you spoke about compounding. Compounding, yes. है ना. और कंपाउंडिंग सिर्फ अगेन यू मस्ट हैव सीन दैट कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, कंपाउंडिंग आपके एक्सपीरियंस में भी होती है. हाँ. जैसे जैसे आपका टाइम गुजर रहा होता है वैसे वैसे अगर आप उसी चीज को लेवरेज कर रहे हैं तो आपका इंप्रूवमेंट आती है. एब्सोल्युटली यार, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कोई 2009-10 में, कोई 30 लाख रुपए से ना, उस पे सारी चीजें. नाउ इट्स वर्थ 1,000 times more than what we started चीजों पे. एंड इट इज विद कंपाउंडिंग. जो मुझे प्रॉफिट आता था मैं उसी बिजनेस में डालता था. राइट. हमने कोई बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी जब खरीद सकते थे ना, अभी भी नहीं करते, क्योंकि हमने कोई वन पार्ट इज कि आई हैव नेवर इन्वेस्टेड मोर इन फिजिकल प्रॉपर्टी. जो घर था वो खरीदना, जो एक लिविंग स्पेस है, कंफर्टेबली करी, बट वी ऑलवेज इन्वेस्टेड बैक एंड समहाउ इट गिव अस डिविडेंड्स इन दैट टर्म्स. और उसी वजह से मैंने अपने डिफरेंट डिविजन्स खोले सिंस इट्स एंड इट बिकेम सक्सेसफुल. ये जो आपका जो एंडेवर था बिजनेस का, जो ऑफ कोर्स अभी तक चल रहा है, तो ये कैसे मतलब कंपाउंड हुआ? उसके बाद आपने 2009 में कंपनी फॉर्म की थी. और उसके बाद फर्दर किस तरह से उसको ग्रो? तो वी स्टार्टेड इन 2009 एंड somehow 2000 हमने ये किया कि कराची में we started operations, then we went on to Lahore and Islamabad and Faisalabad, Multan, and things were just rolling. Things started. I've always been. इतना बुरा टाइम था. I remember कि 2013 में लोग जो है ना ट्राई करते थे कि सूटकेस भर के पैसे दुबई लेकर आ जाएं, लेकिन you were. I wish यार मैं ले आता. but नहीं, मैंने I think I invested in our own company. I think उसी के हम खा रहे हैं. हम तो दुबई में बैठ के कहते हैं पाकिस्तान का खा रहे हैं. पाकिस्तान is a huge country to work with. एक मुझे तकलीफ ये रहती है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स या मैन्युफैक्चरर्स को समझाना कि पाकिस्तान इज सच अ बिग मार्केट, क्योंकि क्या होता है कि इनवॉइस दुबई में इनवॉइसिंग होती है और वो किसी दूसरे चैनल के थ्रू पैसे लाते हैं, तो उन्हें जैसे HP लैपटॉप या डेल वालों को पाकिस्तान से 1.5 लाख लैपटॉप जा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास डाटा पाकिस्तान का शायद 10,000 का ना हो, क्योंकि वो दुबई की इनवॉइस उसी हिसाब से वो मार्केटिंग नहीं कर पाते पाकिस्तान में. ना, क्योंकि उनके वो समझते हैं 1.5 लाख का ऑर्डर दुबई में आया, दुबई की इतनी मार्केट नहीं है. राइट. ऐसी सिस्को को है, ऐसी प्रॉब्लम्स पोलो अल्टो को भी होगा. यही चीज फ्रीलांसिंग के अंदर भी है, क्योंकि फ्रीलांसर्स को मैं देखता हूँ कि वो पैसे पाकिस्तान जो मंगवाते हैं वो प्रॉबेबली रेमिटेंस के उसमें मंगवाते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो क्वांटम है वो हमें कम लगता है. ऑल्दो कि अभी ऑलरेडी वर्ल्ड मैप के ऊपर हम बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी कम लगता है. अगर वो रेमिटेंस के ऊपर ना है, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर उसकी जो कोटा है उसके ऊपर आए, तो वो रेमिटेंस नहीं है, वो तो आपकी इनकम है. आपका आधा पैसा हवाले में चला जाता है. हवाले में चला राइट. पाकिस्तान में आई थिंक टोटल रेमिटेंस कोई 50 बिलियन से ऊपर आती होंगी. अच्छा. डॉलर्स में. अच्छा. आई थिंक 29 की तो आती हैं. कौन रेमिटेड करता है? जो मेरे ख्याल से रेमिट वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं चीज़ों पे. ज़्यादातर जो छोटा तबका है आपका, जो कि वाइट कॉलर में इन्वॉल्व है, ब्लू कॉलर में है, और तो वो अनफॉर्चुनेटली हवाला चैनल यूज़ करता है. राइट. चीज़ों पे. तो इसी तरह इन टर्म्स ऑफ IT, तो अगर डेल को ऑर्डर इतने मिल रहे हैं तो उसी हिसाब से वो ऑफिस अपने स्टाफ को करता है. या तो अनफॉर्चुनेटली इजिप्ट, जो कि शायद पाकिस्तान से 3 गुना कम पॉपुलेशन का मुल्क है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता है डेल
या सऊदी अरेबिया में करता है, क्योंकि क्वांटम पाकिस्तान का वैसे बहुत बड़ा है लेकिन उनके पास डाटा नहीं आ रहा. दिस इज वेयर डाटा हर्ट्स. I've been an advocate and I've told IT ministry and everything to start, Saudi Arabia ने एक बहुत अच्छा decision लिया कि अगर Cisco दुबई में है तो it has to open a regional hub. Pakistan should do that because we are a huge market. IT after textile is our biggest export source, and I think would be हम लोग again जैसे आप 3-4 बिलियन की बात करते हैं, 5-6 बिलियन पाकिस्तान की है, लेकिन has a huge potential of $20-25 million, $20 billion in that terms. Coming to how business of media is in Pakistan, हमारी पहले भी discussion हो रही थी. I always wanted to open my own newspaper and everything. Now I'm actually coming into digital. We're opening the Wire. Actually, I wanted to ask about this. Yes. In Pakistan, it would be whole new IT based. क्योंकि मैं सबसे पहले ये सोचता था, क्योंकि जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसकी उस पर आया, सेलिंग इट एंड समझ में आया, मुझे सबसे ज़्यादा ये होता था कि यार ये लोग सेटेलाइट के इतने राइट्स खरीदते हैं टेलीविजन चैनल, वाई कैन नॉट बी ऑन IP? तो बिकॉज IP इज़ अ मच स्टेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. बीइंग एन इंजीनियर आपको आइडिया होगा, उससे पहले ISDN एक ज़माने में होता था. बिल्कुल चीज़ों पे. तो आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड विद एन आइडिया. ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के हालात भी देखने पड़ते हैं चीज़ों में, जर्नलिज्म. बट सो द वायर is something I've invested. Yeah, actually for the audience, can you let us know what is Wire और क्या इसकी international footprint है? क्योंकि Wire को लोग Indian Wire से भी जो है, या वही चीज़ है जो Indian something on Indian notes चीज़ों पे, with more emphasis on infotainment and news, plus technology. But obviously the kind of technology, the kind of hardware we have invested in, with the kind of things, story which will come out, would be a mix of Wired and the Vice. अगर आपने documentaries देखी है, तो we have big plans. So is it going to be Pakistan based? It will be Pakistan and Middle East based. Okay. Yeah. Okay. So it would be a work of both, but obviously it would be a next new addition to what we do, and obviously this is something I wanted as a passion, as form of passion, but obviously something which I think Pakistan needs at the moment. I think Raza Rumi and Najam Sethi has done wonderful work with Naya Daur. Which is again a digital, but eventually अगर आप हैबिट्स भी देखें लोगों की चेंज हो रही हैं. टीवी लोग कम देखते हैं, इवन घर की खवातीन यूट्यूब और कंटेंट ऑन डिमांड की तरफ जो शिफ्ट आया है, वो सारी चीज़ें. यू वुड सी लॉट ऑफ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स would eventually collapse, and they've collapsed. पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स वैसे ही इतने ज़्यादा है, क्राउडेड मार्केट है कि, और वो भी न्यूज़ के ही हैं सारे, ज़्यादातर जो है इस वक्त जो चल रहा है वो न्यूज़ चल रहा है. अच्छा, होता यही है कि पाकिस्तान is not a very big country, right? It's become a saturated market in a lot of things, and being a journalist and being a businessman actually helps me understand it more better. क्योंकि जो पल्स आती है मार्केट की या चीज़ों पे, यार आपके पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा कोई शहर नहीं है जिसे आप शहर कह पाओ. ऑल्दो मुल्तान एंड फैसलाबाद आर अमेजिंग सिटीज़ नाउ. पेशावर अभी भी आपने डेवलप नहीं किया. क्वेटा इज़ इनएक्सेसिबल, लोग डरते हैं बलूचिस्तान जाने से. तो हमारे पास छोटे शहरों की कमी है. हमारे पास एक बहुत बड़ा, अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से स्पेंडिंग पावर कम हो चुकी है. तो पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ जो 1 पाउंड का केक था उसे 2 पाउंड का होना था और 10 पाउंड का होना था. वो अनफॉर्चुनेटली केक 2 पाउंड या 2.5 पाउंड का है और उसके पीसेस बहुत हो गए हैं. तो और केक वही है, पीसेस होते जा रहे हैं, साइज नहीं बढ़ रहा, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम चीज़ों. तो ये कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी इसी तरह से है जो हम देखते हैं. बाय द वे, इसके ऊपर मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे. हमने अभी यहाँ पर नास समिट अटेंड की थी, जितने भी पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर थे, इंडिया से भी आए थे, वर्ल्ड वाइड बहुत लोग आए थे यहाँ पर. नुसैर ने किया था यहाँ पर अरेंज, जो करते रहते हैं वो लोग. इसी तरह से आपका भी कुछ पास्ट में आपने कुछ इस तरह so in 2009 I think we started the Pakistan's first blogger conference. Okay, 2009 में. अच्छा. और the whole idea was उसमें सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, चीज़ों पे एक्टिव होना शुरू हुआ था. तो ब्लॉगिंग वाज अ कम्युनिटी एट दैट टाइम, बट उसमें उर्दू भी और अंग्रेज़ी भी थी.
उसके बाद we started the Karachi Social Media Summit in 2014, 15 and 17. It was a big hit with limited exposure. Now we are planning to launch the Social Media Summit 2023 later this year, but it will be a next grand level where you know TikTok is sponsoring us. So the whole idea is to bring about कंटेंट क्रिएटर्स और जो बच्चा मेरी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या यूट्यूबर बनना चाहता है या कंटेंट क्रिएटर, उन्हें मिलाएं और एक इलीट सर्कल ना हो, मिंगल होना बहुत ज़रूरी है कि यार आइडियाज़ क्या हो, इट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. I want everybody to access it. You would see the biggest names in that industry globally in Karachi, inshallah. And that's the idea behind it. Okay, so और ये कब हो रहा है? Dates अभी फाइनल नहीं है. September 2023. That's what we are trying because of the weather. हाँ, it would be much better. Yes. हो सकता है इलेक्शंस भी हो जाए. हो सकता है हो जाए ना. ये भी नहीं पता. अभी नहीं पता ना. अक्टूबर नवंबर में होंगे. अगर होंगे और हो सकता है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं. लेकिन obviously पाकिस्तान needs a very sustained मतलब हम Pakistan needs a very, sustainable, not just a foreign policy but a financial policy right now. And as you understand कि हमारी जो जब तक जो हम लोग वही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितने 11 ट्रिलियन रुपीस छापे हुए स्टेट बैंक ने और 2.5-3 हमारे पास, इसमें तो 7-7.5 अरब रुपए और 7.5 ट्रिलियन रुपए. सो स्टार्ट्स ये कि ऑलमोस्ट जो छपे हुए नोट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो सर्कुलेशन में है प्रोबेबली वो तकरीबन कोई 11 ट्रिलियन है. 11-11.5 और जिसका हिसाब है गवर्नमेंट के पास जो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स होंगे 2.5-3 है. हाँ, तो 7-7.5 ट्रिलियन की ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. जिसमें बड़ा हिस्सा रिटेलर्स का आता है. तो एनी न्यू गवर्नमेंट विच फॉर्म्स, देखें एक चीज़ तो साबित हो गई, पॉलिटिशियंस बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी और हालात बेचारे वो उन्हें छोड़ा भी नहीं है मामलात ने, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक हार्ड कोर डिसीजन का. जैसे कि आपने अभी बजट देखा, उन्होंने रिटेलर टैक्स की बात नहीं की. रिटेलर टैक्स अब क्या हो रहा है, ये कराची में जाहिद नहारी है और मुल्ला नहारी है और वहाँ पे लाहौर में नान खताई वाले हैं, क्या नाम है फेमस लाहौर में ये I forgot the name. Yes. So whatever नान खताई वाला, everybody knows that वो कोई हजारों में टैक्स दे रहे हैं, जबकि उनके रोजाना का कैश का गल्ला जो है वो नान खताई वाला जो है हर फ्लाइट में डब्बे जा रहे होते हैं. उनका रोजाना वो मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट जो है वो कोई 18 लाख रुपए गल्ले में डालते हैं रोजाना का. दे आर अनटैक्स्ड. किसी फॉर्म ऑफ रिटेलर टैक्स का आना चाहिए. मुझे पता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत है, लेकिन वो कम होके ये इनके ऊपर. और सबसे बड़ी इसमें जाहिर बात है जो टैक्स कलेक्टर है वही पाकिस्तान में चोर है. और मैं चोर इसलिए मैं जरा सा ओपनली कर देता हूँ. मैं भूल गया, कावजी हैज अ बिग influence on me, and कावजी and I grew together. बहुत ही, वो तो कावजी हमेशा कहते थे जिस घर में भी कराची में जब केडीए के बॉस बने तो जिस घर में भी कलमा लिखा हुआ है वो हराम की कमाई का है या बिल्डिंग डिजाइन गलत है चीज़ों पे. तो कावजी had a big influence on me. Somebody I wrote again through नाजुमात का लौंडा बात आइलैंड में पारसी साथ कैसे through internet. He was one of the few journalists who had an email address on Dawn. अच्छा. और हम 96 में I used to write him my emails and he used to respond and we became very good friends अपना चीज़ों पे. तो this is how life is. Just a quick break. अभी आप अली भाई की बातें सुन रहे थे और अभी आगे अगले सेगमेंट्स के अंदर वो अपनी टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी बात करेंगे. तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ. कुछ वीडियोस मैंने लास्ट जो बनाई थी वो यहाँ पर आपको कार्ड में भी नजर आ रही होंगी. बराका का प्लेटफॉर्म है. अगर आप जीसीसी कंट्रीज के अंदर रहते हैं तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. अगर आपको इन्वेस्ट करना है यूएस के स्टॉक्स के अंदर, आप बहुत आराम से ना सिर्फ यूएस के स्टॉक्स बल्कि MSCI के जो ETFs हैं जो कि UAE या सऊदी से रिलेट करते हैं, आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू. बड़ी ज़बरदस्त एक ऑफर है. अगर आप 26 से 30 जून के दरमियान इनके रेफरल कोड को यूज़ करते हैं, जो मेरा रेफरल कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा होगा, अगर आप उसको यूज़ करते हैं, नॉर्मली $25 का आपको अप टू $25 का आपको रेफरल बोनस मिल सकता है. लेकिन अगर आप 26 to 30 जून 2023 के दरमियान अगर आप यूज़ करते हैं तो अप टू $50 का
आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिटेल्स वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मल्टीपल मैंने वीडियोस बनाई हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ओके, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये हम लोगों का, मेरा जो चैनल है ये पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी से रिलेट करता है। तो प्रोडक्टिविटी में तो आपने बताया कि आप डेटा को बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं एंड देन यू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। लेकिन आपने अपना, सॉरी, टाइम, यस, टाइम इज, so a lot of people come and ask me, Ali, you've written, अभी मैंने 2 किताबें खत्म की हैं लिखने अच्छा, में। I didn't know that. One is called the Mahajar Identity, the other one is the Karachi and Terrorism, which is a political economy and terrorism related book. It's a well thought out research book. मैं 10 साल पहले छाप देता बॉस, लेकिन नहीं छापने दी मुझे किसी वजूहत की। अब मैंने लिखी हैं, ख़त्म की हैं। उसके अलावा जो है वो ज़ाहिर बात है, I've got a business to settle। फिर उसके बाद लिखना पढ़ना और फिर जर्नलिज्म अपनी, ऑल्दो मैंने लिखना बहुत कम कर दिया बिकॉज ऑफ माई बुक्स, चीज़ों पे और हालात की वजह से नहीं लिख सकते जिस टाइप के हम लिखते हैं। तो टाइमिंग इज़ वेरी, तो मैंने तो अपना बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम बनाया। ऑल्दो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चे, मेरा I had my first child in 2018 January. Okay. And we went through a couple of miscarriages before that. It's a personal story, but I always been an advocate के अपना, तो 2018, तो मैं I'm so proud कि मेरे बच्चे ने आज तक मुझे ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। वाओ, ना सही बात है। तो सही बात है, and this was, बिल्कुल, I can relate to it because मेरा तो ये ड्रीम है कि जो ना मैं कब ऑफिस अपना छोड़ूं। वैसे मैं, मेरे ऑफिस के कुलीग भी देख रहे हैं, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे छोड़ना है ऑफिस। तो और उसने मुझे और आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ माई वीडियो कॉन्सल्टिंग बिजनेस सिंस 2015। ओके ना इन पाकिस्तान। तो मतलब आई हैड दैट टाइम चीज़ों पे। हाँ, मतलब मैं अपना प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा फ्रेंड्स, आपको खुद पता है फ्रेंड सर्कल, और हम बहुत ही जो आता है मेहमान नवाज लोग हैं शुरू से। तो आई हैड फ्रेंड्स कमिंग आउट, यू नो, टाइम टू मीट, दोपहर में लंच के साथ भी लगे हुए काम कर लेते हैं चीज़ों पे। तो वो प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइम, ऑफिस भी जाना, ये नहीं है हफ्ते में 3-4 बार जाते हैं ऑफिस या कर लेते हैं। अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूँ 4 ऑफिस 6 ऑफिस अपनी चीज़ से। So and I keep an eye on numbers because I don't want to get outdated of technology and everything. But how do I manage my time? सेहत ख़राब कर ली and I realize कि I could be around 15 kg, जो लोग बहुत दिन बाद देख रहे हो, पता लगा होगा 15 kg मुझे खुद भी थोड़ा सा है ना। हाँ, मैंने पहले तस्वीरों में देखा था आपको, लेकिन सेहत ख़राब कर ली। बट ऑब्वियसली वो रूटीन ऐसा है कि somehow you know, जब लिखना, मुझे पता नहीं 12-1 के बाद लिखने का वो होता है, राइट, आमद होती है और चीज़ों पे। और मैं अपने दिन के काम जो सुबह के हैं वो रात में ही कर लेता हूँ ऑफिस के से रिलेटेड, ताकि मैं 11 बजे उठता हूँ, 10:30-11 बजे, which is, I don't know, it's a good habit, but I do sleep 9 hours every day. Okay. Yeah, that is something I have never taking sleeping pills in my life. I have got an organic, but my somehow body is customized in that way. But तो वो लिखना भी चलता रहता है। But अब obviously once you grow up, you realize you've sacrificed a lot on health. Or coming from you know, middle class or upper middle class and becoming, you know, financially stable, I would say it takes a lot of stress. वो एक पूरी generation मेरे ख्याल से बिल्कुल, आप स्ट्रेस या तो पहले ले लें या फिर बाद में ले लें, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होंगे तो वो स्ट्रेस तो आएगा आपकी ज़िंदगी में एट वन पॉइंट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप दुबई में रहते हैं और 11 बजे किसी को लेने चले जाते हैं, तो मैं तो बहुत लोगों को लेने चला जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो लोग जो ना, अगर जो जॉब कर रहा है वो तो फिर इस तरह नहीं निकल पाता। तो I had that excess time in life. I'm so happy that my son sees me, you know. वो स्कूल जाने से पहले भी आपको देखता है, आने के टाइम पे भी देख रहा होगा, and that is life. That is life. So in that things yeah, that is important कि आप अपने आप को फ्री कर लें। मतलब वेल्थ बिल्डिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टाइम आपके कंट्रोल में रहे। आपका टाइम आपको कंट्रोल ना करो या कोई और आपको कंट्रोल ना करो, टाइम आपको कंट्रोल करना, टाइम को खुद आप कंट्रोल कर लें। अच्छा, ये तो बिजनेस एस्पेक्ट हो गया और प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट हो गया, बट देन आफ्टर दैट उसमें फाइनेंस, जो आपके अपने पर्सनल फाइनेंस है, उनको किस तरह से मैनेज किया? और शुरू से आपने मैनेज किया इसी तरह से? So I have an Excel sheet of my life. अभी तक? Good. And I've it started with Excel sheet, then I have a personal software which I use, but I do keep a backup as a Excel sheet. Every day is a routine in my life from last 15-18 years.
I have so I have an entertainment budget. मेरा एक ओपिनियन है, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना दो मुख्तलिफ बातें हैं. सही बात है. राइट. मैंने अपने मैनेज तो एक्सेल शीट है, और एक चीज़ मैं बहुत कहूँगा स्पेशली समहाउ साउथ, everything I have is known to my wife, right, spouse, and everything she vice versa, because I think वो जो लोग छुपाने का कल्चर very uncommon in South Asian. हाँ, तो आप रोजाना साथ सो रहे हैं, you call a partner and vice versa, and you hide. कितने मेरे एक दो दोस्त थे जो इनकी डेथ हो गई, जिनके दोस्तों ने पैसे मार लिए, वाइफ्स को पता ही नहीं था चीज़ों पे. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल फाइनेंस में, जो मैं समझता हूँ कि हैव टू बी ट्रांसपेरेंट. सो आई हैव एन पासवर्ड प्रोटेक्टेड, डबल इनक्रिप्टेड एक्सेल शीट विद एवरीथिंग. our finances are tracked, so I keep an entertainment budget के भाई, और मैं बड़ा लेविशली जीता हूँ, मतलब रोजाना बाहर खाने का भी चीज़ों पे, और हम बचाते भी हैं. कंपाउंडिंग चलती रहती है चीज़ों पे. मुझे somehow 2012-14 से एहसास होना शुरू हुआ कि पैसा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है. बस होना मतलब था, लेकिन और भी एहसास हुआ जब शादी हो रही थी चीज़ों पे. तो आई ऑलवेज हैड दिस नंबर कि यार मैं यहाँ तक अगर कर लूँ, always a number in mind, and that keeps on increasing many folds now. yes. चीज़ों पे. तो पहले आप कहते थे यार आपके पास 50 लाख आ जाएं, फिर 5 करोड़, और फिर 10 करोड़, और फिर 50 करोड़, और पता नहीं कितने करोड़. नेवर एंडिंग. बट आई थिंक you should have a very sustainable थिंग. इतना भी नहीं पैसों के पीछे पड़ें कि अपने सब कुछ बर्बाद कर दें. But the work-life balance is controlled. But in terms of personal finance, I do watch your videos. I watch some, क्योंकि हमारे यहाँ कंटेंट था ही नहीं ना भाई. मसला ये था, हमारे यहाँ तो सिर्फ आके वो सस्ते जोक्स मारना वाला कल्चर था. तो it's nice to see people like you telling us about personal finance, compounding, mortgages. You've done excellent work on Pakistan. ये जो हमारा फंड था, फॉरेन Russian digital accounts, yes. I was a fan. Actually, I am a fan of that product. मुझे ये भी पता चला आपसे ही परसों कि यार हमारे बैंकों में पैसे रखे रहते हैं कि 8% दे रहे हैं अभी भी. हाँ, अभी भी 8%. अभी भी अच्छा, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था. USD में 8% दे रहे हो. USD डॉलर्स में कौन सा मुल्क देगा? इस वक्त कोई भी नहीं दे रहा. और कितना सेफ है ये? हाँ, ये सेफ तो है, मेरे ख्याल से सेफ है. ऑफ कोर्स. एक चीज मैं आपको करूंगा, हमारे यहाँ रेगुलेटर्स बड़े स्ट्रांग रहे. अगर आप देखें स्टेट बैंक, बाय द वे, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट, ये मुल्क के साथ क्या होगा, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था 2000 में न्यूक्लियर इंसिडेंट के बाद. वो लोगों के पास अब तक उनके स्टैम्प मेमोरीज हैं उस चीज की. तो मैं, बट इफ यू सी इंडिया, so many banks have collapsed. State Bank of Pakistan somehow, I've got a lot of friends who are very good professionals working for State Bank. उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी, अपनी कंप्लाइंस रखी है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स विच इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में बर्बाद हुए. तो समहाउ बैंक्स एंड एवरीथिंग इज बिन अ स्टेबल थिंग. मैं हमेशा पाकिस्तान को कहता हूँ, पाकिस्तान इज अ वेरी एबनॉर्मल कंट्री. एबनॉर्मली नॉर्मल कंट्री, जहाँ पे मतलब बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, चले जाते हैं. समहाउ अ ब्लैक इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्स अ वाइट इकोनॉमी एज सच. लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने बुरे नहीं है जितने मैं दूसरे मुल्कों के देखता हूँ. आई ट्रेवल अ लॉट. So coming back to personal finance, मेरे ख्याल से एक और चीज़ मैंने की कि मैंने जो है वो प्रॉपर्टी फिजिकल नहीं बनाई जितने हमने कारोबार सेटअप किए. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ रिस्क टेकर. नुकसान किए, मानते हैं, लेकिन यू लर्न दैट. और फिर वो जारी बात है, नुकसान करने के बाद आई ऑलवेज से कि मैंने आई हैव लर्नड इट, नाउ आई विल डू इट बेटर. राइट, चीज़ों इंस्टेड ऑफ नॉट ट्राइंग अनदर टाइम. तो वो लर्निंग ही है बेसिकली. नुकसान जो है वो लर्निंग है. I'll tell you a very interesting story about, I ventured into agriculture farming and cattle farming, right? And so we bought around 100 animals for Karachi. ये जो बकरा ईद होती है 2018 की, 18 की. अच्छा. And so I'm a journalist, observer. मैं गया और मैंने वहाँ पे कराची कैटल मार्केट में प्राइसिंग लगा दी कि यार ये 99,000 का फिक्स्ड रेट का जानवर है. ये आपने कैसे किया?
आपने खुद अपना I bought 100 animals, okay, brought them to Karachi market. so you just ventured like that? Yeah. Okay. Not impulsive, of हाँ. course. I've worked on it. तो आपने फार्म तो पहले से I बनाया had होगा? a farm, so Okay. it was complementing that सारी चीजें. But मैंने कहा ये क्यों नहीं हम इससे ब्रेक करते साइकिल को. तो I had a 100 animals. Haggling को break. 99,000, 120,000 and 150,000 animals, and we fixed those prices. Okay. अच्छा, मगर फिर भी जो लोग आ रहे थे, I used to, this is very good example I give for sales people exactly. अब मैंने देखता था कि दूर से खड़ा हुआ मेरे जो सेल्स वाले थे, तो वो बंदा आता था पूछता था जी कितने का है, तो जो 99 वाले 1000 का, जबकि उस वक्त हमने नहीं इतना एडवर्टाइज किया हुआ था, जो सेल्स वाला कहता था 99,000 के एनिमल को जी मैं 2 लाख का दूंगा. और जो वही आदतें जो पड़ी हुई थी, 1.5 लाख का जो जानवर था उसे 4 लाख का बताते थे कि इतनी. I changed that. So I had this. I trained my salesmen, and I've implemented it in every sector of business. कि जो 90 मैंने कहा जो लाख रुपए का जानवर छोड़ना है ना, उसे 1,05,000 बताओ, और उस पे 500 1,000 रुपए कम करो. वो जानवर यार 15 दिन पहले बिक गए, राइट ना. और वहां पे and what I've learned is that the cattle farmers are so greedy, they want to wait till end of it. फिर वो नहीं देखते बारिशें कैसी होती हैं, और all of this, that pain they take. So that was something, an experiment. It made me a profit, but point I've learned a big lesson in consumer, because हम consumer में आज तक behavior में गए नहीं थे कभी भी. We have always so you fixed the prices, और अभी कुछ उसके बाद आपने किया? We have around वो हमें मंडी आने की जरूरत नहीं पड़ती. 250-300 जानवर जो हैं वो on order, वो we made the database of the client. अच्छा 2-6 जानवर, अरे आप बेच रहे हैं जानवर मंडी में? अच्छा. To them it was a shock. Yes. क्यों नहीं यार? We took everybody's database, profiled them. Now on WhatsApp they buy it. They're a repeat customer. हम 10% या 5% बढ़ा देते हैं, and we don't go to the market. We deliver at the house. अच्छा. This is something on ongoing project. Right. वैसे आपकी तो पूरी लाइफ इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है. तो इफ यू टॉक अबाउट लास्ट 20 इयर्स, सबसे इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वो यहाँ नहीं बता सकते. But I'll tell you about Karachi. I'm a passionate Karachiite. Karachi में जो stories हैं, I want to. I wanted to talk about storytelling as well, because I think कि आपकी storytelling बहुत अच्छी है, और मैंने YouTube जब से start किया तो मैं भी थोड़ा सा इसको improve करना चाह रहा हूँ. तो storytelling के बारे में, and then any incident related to. So storytelling came from probably my दादी. वो हमें stories, but stories एक तो हमें I've been lucky to actually witness it. I think my observation sense is very good. जो रिकॉर्ड कर पाती है and could tell it in a verbal communicative way चीज़ों पे, and that's how I developed it. So it became a thing. But I'll tell because you, आप राइटिंग भी करते हैं और आप जर्नलिज्म में भी है, तो उसमें विजुअलाइजेशन भी विजुअलाइजेशन एंड क्रिएट करना होता है ना सीन पूरा. और मैं समझता हूँ कि देखिए in next 50 years or 60 years or 100 years हम तो नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे और उनके बच्चे होंगे. AI would take over and technology would take over. Still is, automation would take over in a lot of things. One thing would keep us, ahead of competition is creativity. The computers or AI would always lack in creativity, and that human, I think, nature, जो creativity part है, वो ही हमें अगर हमारे AI दुश्मन बन जाती है, and we तो that creativity जो जिसे जुगाड़ कहते हैं, एक अगर आप lowest denominator को ले लें, that would distinguish, because I think we would always have a same skill set in 150 years because of the information which we have. A normal person could be a doctor in about 150 years or 200 people. But that creativity part, that's what. So I am implementing that to my son. So I'm actually giving him, stories and things. So somehow I want my child to be more creative than, be good in maths. Yes. Because a computer could do math for him. Yes, exactly. That what do you think? Very true. That is very true, because जो क्रिएटिव माइंड होता है वो सब कुछ कर सकता है. बिल्कुल. उसको जरूरत नहीं है, वो इवन एप्पल का सीईओ भी बन सकता है अगर वो उसको मैथ्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला. आई थिंक क्रिएटिविटी और सेल्स
ये हर बच्चे को सिखानी चाहिए। बिल्कुल। एंड देन लाइक स्टेइंग ऑन दिस टॉपिक, मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया आज से 2-2.5 साल पहले, तो मुझे ना क्रिएटिविटी मुझे पता थी, ना मुझे लेट से सेल्स पता थी, मैं तो इंजीनियर हूँ ना। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे क्रिएटिव भी होना पड़ा। ये बिल्ड कर सकते हैं आप, ये ऐसा नहीं है कि कोई गॉड गिफ्टेड है प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स होती है लोगों में, लेकिन आप इसको डेवलप भी कर सकते भाई हैं। गोरा अपने बच्चे को जून जुलाई की छुट्टियों में कहता है लेमनेड बेचो, हाँ राइट। बिल्कुल। एंड मुझे तो खैर हम लोग नहीं उस मॉल में, तो ये जो गाय वाले वेंचर पे मैं गया वो इसीलिए गया कि यार to test my skills, obviously I could sell anything, but I sell information. I could sell anything, but point is कि it helped me a lot, in consumer behaviors. Talking about stories and Karachi, मैं आपको बता रहा था एक ओबामा ने I don't know, ओबामा ने कहा कि second or third biggest designated drug lord in Karachi. I had a friend who called me that Obama said something, and Obama was the president at that time. Yeah, 2009 he said it. Okay. And he said that he lives in Pakistan. I found him in Karachi, had a big house in Phase 8. Then this a friend called Matthew Green, I want to name him. He was writing for Reuters, and I used to help him a lot. He called me, Ali, did you hear that there's certain, I don't want to take that name, but he is involved in, selling, guns in Africa. I said, what? So there was this chap, bugger from Karachi, वो क्या करता था, उसने एक एयरलाइन खोली कराची में, और वो नॉर्थ कोरिया से कोई $50 की AK-47 लेता था, और फिर वो कॉन्गो और वॉर जोन्स में बेचता था, अपनी एयरलाइंस भी यूज़ करता था, वो भी कराची में बैठा हुआ। तो हमारे कराची में कौन कौन बैठा हुआ है, और वो मैं उसके बारे में 200 गज के घर में वो बैठा हुआ कराची से बिजनेस कर रहा है, कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, नोबडी नोज। सो कराची इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू लिव। और मैं हमेशा कहता हूँ हम जो जिंदा बच गए वो इसलिए बच गए कि हम कराची वाले थे। कराची में कोई और होता तो हैड अ मोर चांसेस ऑफ चीज़ें। तो एक और चीज़ है, स्ट्रीट स्मार्ट थे यार बिजनेस में। इट्स वेरी कॉमन अनकॉमन टू हैव कॉमन सेंस नाउ, राइट। तो स्ट्रीट स्मार्ट थे। एक हमारे एक दोस्त हैं, उनके दोनों बच्चे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके दोनों बच्चे अमेरिकन स्कूल में पढ़े। वो कहते हैं कि यार दोनों बोंगे निकले। तो अब वो उन्होंने फिर अपनी एक फैक्ट्री में भेजा उसे नीचे से वापस स्टार्ट करने के लिए और चीज़ें, क्योंकि हमने तो यार काम सीखा ही काम में ना। एक तो ये हुआ कि हमारी एजुकेशन में कभी कोई इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें थी नहीं, और प्लस ये कि आपने जो काम भी किया वो भी अनऑर्थोडॉक्स था, मतलब ऐसा कोई ये नहीं था कि ऑफिस जॉब आपने कभी we were disruptors in everything, right? So in journalism, we started blogging as a culture. Journalists मानते ही नहीं थे कि ये ब्लॉग है ना। ब्लॉग क्या है चीज़, आज वो हर चीज़ डिजिटल पे और न्यूज़पेपर रिडंडेंट हो गए, राइट। और ऐसी ब्लॉग्स रिडंडेंट हो गए, और विजुअल्स आ गए, यूट्यूब आ गया, चीज़ें। और यूट्यूब के बाद आपके पास आप देखिएगा कि पर्सनलाइज न्यूज़ आ जाएंगी, कंटेंट ऑन डिमांड आ जाएगा चीज़ों पे। तो स्टोरी टेलिंग में लेट मी जस्ट से आई एम एक्चुअली इन अ प्रोसेस ऑफ, आई हैव रिटन 2 वेब सीरीज. Yeah, one is called Gangs of Lyari. Acha. This is on Uzair Baloch. Everybody who knows in Karachi knows I was very close with Uzair Baloch, still is. And other one is, of course, is on Ayub Afridi, who was the biggest narco trader in Pakistan. He was also based in Karachi? He was in Peshawar, Dera Adam Khail और ये Fata region के थे, and at that time he had a bigger business than so-called ASCOP of Colombians then in Pakistan. And when was that? In 80s, because story about Ayub Afridi is very simple. The Americans, CIA wanted to drug the Russian soldiers into narcotics, so they supported with हमारी agencies obviously Russian. But हमेशा याद रखिएगा कि हुआ क्या, कराची में भी यही हुआ कि जब आपने पिस्टल पकड़ाई एक आदमी को, पॉलिटिकल पार्टी ने या फौज ने किसी को एक काम सही करने को कहा, तो वो 10 काम अपने कर रहा होता है, एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई ना चीज़ों पे। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पिस्टल या एम्यूनेशन सिर्फ यूनिफॉर्म लोगों के पास होना चाहिए, लोगों के पास होना ही नहीं चाहिए। तो कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, जो हमने अपने मुल्क का ये जो
हमने ये जो किया है ये अंडू करने की ज़रूरत है. आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ होप इन पाकिस्तान. It's an organic country. It's not like an artificially made country. It has a potential. It's been there at with a different name for thousands of years, right? नंबर 5th नंबर पे पॉपुलेशन है पाकिस्तान की तो वो है, but population itself has become a curse for us. अगर आप जानते हो तो uneducated population is. कल मैं सो नहीं पाया सुन के 289 हमारे लोग ख़वातीन के साथ हो गए. हमें बहुत ही अपनी इकोनॉमी को देखने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की. जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है. वहाँ पे हमें फैक्ट्रियाँ लगाएं, जॉब्स क्रिएट करें, और हमारे ही मुल्क में कंजम्पशन है उसकी. अब आप पेट फूड की बात करें, हमारे मुल्क में फैक्ट्री लगनी चाहिए. हर चीज़ का मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत एक उसे कहते हैं ना हॉलो है वो जगह, क्योंकि लेट्स से पेट फूड की आपने बात की, इसी तरह से आप अगर पेट फूड तो बहुत नीश है. आप यार सीसीटीवी कैमरे की फैक्ट्री नहीं लगा सकते पाकिस्तान में. पाकिस्तान में इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास. कोई बड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी है सीसीटीवी लगाने की. मैंने आपको एक वेंचर स्टार्ट किया. आई हैव जस्ट मेड I'll tell you, I've launched a brand called The Big Touch, which is, हम क्या करते थे, जाते हुए इंटरैक्टिव इंपोर्ट करते थे, 40% टैक्स देते थे उस पे. तो अगर मेरे $1200 की चीज़ आई तो मुझे वो पड़ गई कोई $1800 की, और फिर मैं बेच रहा हूँ कोई $2400-2500 की चीज़ों पे. हमने क्या किया कि एक स्क्रीन बनाई जो किसी भी टच स्क्रीन पे लग जाती है और वो टच बन जाती है चीज़ों, और हमने उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, द बिग टच इंटरैक्टिव. तो वी मेड द फर्स्ट इंटरैक्टिव टच एलईडी विद अ वीडियो कॉन्सेप्ट व्हिच इज मेड इन पाकिस्तान. वी सोल्ड 600 units to China for the first time. अच्छा, नहीं. अब क्या हो रहा है कि जो 6 लाख में बिजनेस की बात करें, जो 86 इंच का जो नॉर्मल टीवी है पाकिस्तान में बिकता है 14 लाख रुपए का. अच्छा, राइट. मैं टच स्क्रीन जिसके जो Core i7 जिसके अंदर पीसीबी लगा हुआ है, मैं बेच रहा हूँ 6 लाख रुपए का, बट इट्स मेड इन पाकिस्तान. उसकी ब्रांडिंग वगैरह बेहतर कर रहे चीज़ों पे, but I think there's a huge potential for it, right? I think a lot of people don't want to invest or don't have the time to do it. I've always been a creative person. I've been a good decision maker. एक कारोबार में मैं एक चीज़ सीखा हूँ, it's not the biggest who wins the race, it's the fastest, right? तो मैं भी जब आया था मुझसे बहुत बड़े लोग थे, लेकिन मैं पहले पहुँच जाता था. मैं हमेशा कहता हूँ कोटेशन आप पहले भेजा करें और सबसे बेस्ट भेजा करें, क्योंकि जब वो 3 आदमी कोटेशन लेता है सबसे लोएस्ट जो होगी वो. तो ऑलवेज डोंट थिंक योर कस्टमर इज अ फूल, राइट? ऑलवेज लुक्ड एट माय स्टाफ इन बिजनेस. आई थिंक दे आर माय फोर्स, दे आर योर एसेट एज वेल. पाकिस्तान में क्या होता है कि अपने धंधे खोल लेते हैं सीख के, लेकिन फिर हमने क्या हुआ, कमीशन बेस्ड सिस्टम दिया. वी पे कमीशन नाउ आफ्टर लर्निंग दैट मोर कमीशन, ताकि वो अपने वो भी हो कि सिर्फ सेट नहीं कमा रहा, दे फील एम्पावर्ड. प्लस उनको इंसेंटिव रहता है, इंसेंटिवाइज करना चाहिए और अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए. नॉर्मली क्या होता है कि दैट सेट कल्चर वी हैव गॉन अहेड इन दैट टर्म. सो फ्रॉम अ पर्सनल, मैं अपनी तो मिसाल मैं दे सकता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि स्कूल की फीस वी पे एम्प्लॉय स्कूल फीस. Or employees for last 8 years now. Very nice. We that thing हम लोग करने. आज तक सैलरी कभी लेट नहीं होने दी. ना जितने भी हालात हुए, कोविड में किसी को नहीं निकाला, और ये एहसान नहीं है ना. This is something it's a responsibility. There are always things, and retention भी अच्छी है चीज़ों पे. Pakistan again is a very difficult place to do business, but obviously it is worth billions. Right? I think it's a better market than Dubai. It's a better market than Riyadh. थोड़े से अगर आज गवर्नमेंट कह देना 300 का ही डॉलर है और ये 2 साल तक है, राइट? 2 साल तक पाकिस्तानी बिजनेस वुड डू वंडर्स. बिल्कुल सही कह रहे हैं. इंस्टेबिलिटी क्या होती है, बिजनेस तो हो रहा है, डिसीजन मेकिंग डिले कर देती है. तो 1 महीने की चीज 3 महीने तक चली जाती है. ऐसे ही है. अब मैं एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं पाकिस्तान में,
और उनको नज़र आता है कि यार बैंक से हम भेजेंगे लेट से 290 का डॉलर भेजेंगे और वहाँ पर ओपन मार्केट में 320 का मिल रहा है लेट से, तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ से भेजें। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड वहाँ पर जाकर वो उसको डॉलर को कन्वर्ट कराएंगे ओपन मार्केट से, तो उनका वो एफबीआर का मसला आ जाएगा कि आपने ओपन मार्केट से कहाँ से पैसे आए, ये तो ब्लैक मनी हो जाएगा वो वाला, वो एक अलग मसला है। तो उसकी वजह से लोग डिले करना शुरू कर देते हैं अपने डिसीजन और भाई इन्वेस्टमेंट मैं से। पाकिस्तान में भी कहता हूँ एक और जो प्रॉब्लम जो सोशियोलॉजी का भी है। आप रह रहे हैं जी 10 करोड़ के घर में या 8 करोड़ रुपए के घर में और कमा रहे आप 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा, बेचो यार 10 करोड़ का घर ना चीजों पे, रहो 2 करोड़ के घर में, 4 करोड़ बैंक में रख दो, 2-3 करोड़ का बिजनेस करो। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो घर तो बड़ा होगा, गाड़ी भी उससे बड़ी होगी, लेकिन एसी नहीं चलाएंगे, बच्चों को गर्मी में रखेंगे कि यार बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो यार मैं कहता हूँ ऐसा, इसका कोई फायदा नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। आप अगर गर्मी के अंदर ह्यूमिडिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं, आप बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल बेस लेवल पे ले आएं, घर भी आप अपना कम कर दें, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं हो सोचा आप एसी ऑन करने से पहले आप ये ना सोचें कि बिल आएगा मेरा। यार हमारे तो अब्बा जबकि प्रोफेसर आदमी थे, माय मदर वर्क फॉर पीआईए, वी ऑलवेज हैड क्रीम चीज इन लाइफ। हमारे अम्मा अब्बा ने एजुकेशन पे स्पेंड किए या अपने खाने पीने, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोग हॉलीडेज पे जाते थे, खैर पीआईए, थैंक्स टू पीआईए हम 500 रुपए में फ्री टिकट अमेरिका से वो आ जाते थे। 28 पे खत्म कर दिया था, बट I always thank PIA for what lot of things बेचारा तबाह हो गया हम लोगों की वजह से, but point is कि this is how thing is, but वली भाई प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें आगे चलना है। I've learned बिटर तो हो जाता है इंसान लेकिन अपना चीज़ों पे, बट हमें मेरे ख्याल से एक तो कम्युनिटी, मैं चाहता हूँ कि जो बाहर लोग हों वो अपने आप को किसी सियासी वाबस्तगी में न लाएं। आउटसाइड यू आर पाकिस्तानी, यू शुड हेल्प पाकिस्तानीज। आई थिंक आप मुझे जितना भी थोड़ा जानते हैं, आपको पता है हमारा घर हमेशा खुला है लोगों के लिए। आई ऑलवेज हेल्प पीपल एंड पीपल हैज हेल्प मी। अच्छे बुरे लोग हर जगह होंगे चीज़ों पे, मगर लर्न टू ट्रस्ट पीपल। और बिजनेसमैन को भी मैं एडवाइस दूंगा कि अगर मैं भी कराची में एक गल्ले पे ही बैठा रहता और अपने बेटे को ही लगाता, मैं कराची से बढ़ ही नहीं पाता। इफ़ वी आर डूइंग बिजनेस इन 4 कंट्रीज, राइट, तो इट इज़ बिकॉज आई ट्रस्ट माई मैनेजर्स। अच्छा एम्प्लॉई कभी बीमार नहीं होगा। आप सिस्टम्स ऐसा रख करें और मौके ना दें तो कुछ नहीं होगा। और जाहिर बात है, मतलब आप दिस इज वेयर टेक सपोर्ट्स यू। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, सप्लाई चेन अच्छा होना चाहिए, चीज़ों पर प्रोक्योरमेंट चले, मैं कहता हूँ कि चले, आप खुद देख लो। बट एज अ सीईओ और एनी बिजनेस हो जाए, यू शुड बी इनटू स्ट्रेटेजी नॉट इन ऑपरेशंस। बिल्कुल ना चीज़ों पे डे टू डे के अंदर आप ऑपरेशंस के अंदर ना जाएं। हाँ, आप वो करेंगे तो फिर आप पीछे रहेंगे। एंड और अब मैं कहता हूँ कि अफ्रीका आपके लिए खुला है, हम क्यों नहीं जाते अफ्रीका। मैं कीनिया गया, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं युगांडा देखा, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। लॉट ऑफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम कीनिया के सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं चाय की वजह से। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। व्हाट इज आवर एम्बेसी डूइंग, राइट? तो हम इंडिया से बड़े पार्टनर हैं कीनिया के इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। यूएई इज बिकम द नंबर 1 या नो। एंड कीनियंस आर सो, वो एवोकाडो की सेल में आ रहे हैं, चीज़ों पे। मिडल ईस्ट में देखा जाए, पाकिस्तानी मीट इज अमेजिंग, बट वी ओनली हैव 1 स्टॉक लिस्टेड कंपनी, पाकिस्तान मीट कंपनी। हाँ, जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुई थी, अल शहीर के नाम से थी मेरे शहीर, पाकिस्तान मीट कंपनी, राइट? दे डूइंग वंडरफुल वर्क, बट I was shocked. Fauji Foundation has opened. That's a very good friend called General Tariq Khan who was there. Fauji Fertilizers or Rashid Qureshi. They introduced me to the Fauji slaughterhouse, which is the best slaughterhouse in the world. मेरा एक वियतनामी एक दोस्त था, उसने मुझे 40,000 गोट्स का ऑर्डर दिया, राइट? मैंने कहा चलो मैंने उसकी वीडियो दिखाई, वो पागल हो गया देख के कि इतना अच्छा है। लेकिन जब उन्हें ऑर्डर दिया, वो कहते हैं अच्छा जी कर लेंगे। मैंने कहा एनिमल्स भी हम ला के दे देते हैं। सो वी नीड गुड मैनेजर्स इन एवरी फील्ड, बी इट एंड स्पेशली इन फाइनेंशियल। आई थिंक देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ, मैं तो कहता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एक तो मैं समझता हूँ वोट हमेशा इमोशंस पे देता है, कभी भी रैशनल पे कभी किसी ने वोट नहीं दिया, राइट? तो इमोशंस पे वोट पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान एंड नवाज शरीफ, एंड आई डोंट नो ये चैनल आपका है, बट हम लोग हैं पाकिस्तानी ना, दो को होता है।
दे हैव टू सिट टुगेदर यस एंड उसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। इमरान खान साहब को फ्लेक्सिबल अब जो हुए हैं वो पहले दिखाना चाहिए था, नवाज शरीफ को अब एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को बैठ के कोई हल, क्योंकि इन दैट बिटवीन एटलीस्ट 240 मिलियन पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। हमारी मिलिट्री को भी बैठना भी चाहिए और सोचना समझना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मिलिट्री के साथ काम कर चुका हूँ, मिलिट्री के लिए काम कर चुका हूँ, मिलिट्री के साथ काम कर चुका हूँ। उनके लिए अभी भी शायद किसी कैपेसिटी में कर रहे हैं, इन जर्नलिज्म एंड इन बिजनेस। मैं हमेशा वो कहता हूँ, अच्छा एक और भी चीज़ ये जो आजकल जो नए यूट्यूबर्स आए व्यूज़ के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ मिलिट्री आपको उठाएगी कब, जब बहुत बड़े डर रहे हैं लोग और मैं ओवरसीज पाकिस्तान, यार आप एक तो फेक प्रोपेगेंडा में ना आए, दूसरी बात आप मिलिट्री ने हमेशा तनकीद सही है, लेकिन जब आप उनकी इंटरनल म्यूटनी की बात करते हो कि मेजर साहब उनके खिलाफ हैं झूठी खबरें, मिलिट्री इज एन इंस्टीट्यूशन, तो आप कोई बर्दाश्त नहीं करेगा चीज़ों पे। तो पाकिस्तान स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट फ्री कंट्रीज इन दैट, मगर ऑब्वियसली हमारे यहाँ मसले बहुत हैं, मिलिट्री को भी समझना पड़ेगा, इन्हें भी समझना पड़ेगा और उन्हें भी समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है ना मैं ये देखता हूँ कि जो हमारा जो बॉटलनेक है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री को बिठा दें। आप एक प्रैक्टिकल बात कर, वो जैसे मुशर्रफ ने भी की थी चीज़ों पे, जनरल मुशर्रफ ने, आपको बिठाना पड़ेगा ना, या उनकी इनपुट आपको लेनी पड़ेगी, और उन्हें जो है मिलिट्री वालों को जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और अब कितने एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं उनके, फ्रॉम द गुड बैड तालिबान्स टू PTI टू MQM, सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो नवाज शरीफ इवन भुट्टो, राइट? तो ऑर्गेनिकली आपको करना पड़ेगा। और यार डेमोक्रेसी क्या करती है, इट फिल्टर्स गुड बैड एंड ईविल। अगर एक प्रोसेस चले, इट प्रोसेस एक दो इलेक्शन से नहीं, 4-5 इलेक्शन से आपको रिजल्ट मिलना है, तो इट फिल्टर्स गुड बैड एंड ईविल। बट पॉइंट इज कि अब जिस तरह से आपने पार्लियामेंट के बगैर TTP से डील कर ली, राइट, या आपने बताया सिर्फ उन्हें, एंड इट हैड अ बिग ब्लो बैक, और फिर बाद में अभी हमने वापस से बात की है, लेकिन तरीके से फ्रॉम स्ट्रेंथ बात की है। हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा मसला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, वी आर लिविंग विद अ फेल्ड स्टेट विच इज अफगानिस्तान, नेक्स्ट डोर टू अस, और वो हमारा नेबर है और वो चेंज नहीं हो सकती रियलिटी। अफगानी आके 10 रुपये ऊपर का डॉलर पेशावर से खरीद रहा है। आपके मुल्क में आधी महंगाई जो है वो अफगानिस्तान के लिए, मतलब आपके यहाँ बकरे से लेके चीनी से लेके क्या नहीं हुआ, मतलब आपके पास एक 5th प्रोविंस है और 6th प्रोविंस है जो 5 करोड़ लोगों का, 6 करोड़ लोगों का है, जिसे आप पाल रहे हो। इंडस्ट्री चल रही है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, स्मगलिंग है चीज़ों पे। इसी तरह तो उसकी वजह से आपके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं चीज़ों पे। ऑल्दो हमने फेंसिंग करने की कोशिश की, आई हैव लिव्ड इन अफगानिस्तान, आई हैव डन बिजनेस अ लॉट विद अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान, इन काबुल, in IT, I've done journalism there a lot, written extensively on Afghanistan, but Afghanistan is a failed country, right? They earn only from wars. हमारे मुल्क में ओवर, यार हम लोग इंग्लैंड में थे, 40 लोग अगर एक बार आ जाते थे फ्रेंच बॉर्डर के थ्रू, वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी। हमारे मुल्क में बॉर्डर ही खुला हुआ है हमारे मुल्क में बॉर्डर खुला हुआ है, 4 से 5 मिलियन 6 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं, मेरे भाई हैं, मतलब आई हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर देम चीज़ों पे। बट एक पूरी जनरेशन, या तो आप उन्हें ID कार्ड दें, फॉर्मलाइज करें इकोनॉमी में, टैक्सेशन में लाएं। आपके पास ऐसी 2 से 3 मिलियन बंगालीज हैं, फॉर्मलाइज करें। कराची में क्राइम क्यों है? उनको तो कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है अब, उनसे तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। दे आर पाकिस्तानी, एनीबडी हु इज बोर्न इन पाकिस्तान इज अ पाकिस्तानी, जैसे अमेरिका में, राइट? चीज़ों पे आप वहाँ भेज नहीं सकते, वो लोग वो है नहीं। तो आपका मुशर्रफ ने एलियन कार्ड स्टार्ट किए थे, नादरा ने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, बट कराची हैज़ over 1.2 million aliens who doesn't have ID cards. अब वो बच्चे जो हैं वो 200-150 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, फिर वो जाके अपना साइट पे मोबाइल भी छीनेंगे, वो भी करते हैं। I'll tell you about 2 brothers who are Afghan nationals, जो कि मशीनरी मार्केट अलासिफ में, कराची में 80% बाइक्स, और जो बच्चे, they have 12,000 Afghan children working for them, children who is nothing, जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, 2 brothers,
जो कि ड्रग्स भी बेचते हैं, आपके गाड़ी के शीशे भी साइड करके आपको वहीं पे जमा होते हैं, वहीं पर हो जाते हैं और वहीं से कस्टमर भी आ जाता है। पुलिस नहीं पकड़ सकती, नाम नहीं है, पुलिस भी हमारी इन्वॉल्व हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, यू नो दैट। तो आप इस शहर को कैसे चला पाएंगे जो कि कितने मुल्कों से बड़ा शहर है, जहाँ पे 1.2 मिलियन लोगों का आपको पता ही नहीं है कि कौन है चीज़ों पे। तो इट हैज, कराची हैज टू सी, यू नो, कच्ची आबादी रजिस्ट्रेशंस। एनीबडी लिविंग इन कराची शुड हैव एन आईडी कार्ड, और एटलीस्ट रजिस्टर्ड विद द तो अथॉरिटीज। कोई आईडी होना चाहिए ना, कि किसी चीज़ की भी आईडी नहीं है। अगर अगर जैसे हम यूएई में होते हैं तो कोई बंदा लैंड करता है, कोई रेजिडेंट है, तो उसकी वंस एमिरेट्स आईडी बन जाती है, वो फॉर लाइफ लॉन्ग होती है। मैं एक दफ़ा यहाँ से गया था, फॉर गुड गया था और वापस आया था, मेरी वही एमिरेट्स आईडी रिन्यू हो गई थी। तो वो एक आईडी आपके अगेंस्ट जो बन जाती है, वो गवर्नमेंट के पास भी तो होना चाहिए। एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड कंट्रीज। हमारे नादरा को हल्का ना लें, हमारी नादरा कीनिया में, नाइजीरिया में, यू नो, अफ्रीकन कंट्रीज, श्रीलंका में हमारी नादरा ने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। वी हैव अ वेरी गुड, इट्स जस्ट द पॉलिटिकल विल आई थिंक, व्हिच वी थिंक, स्पेशली इन कराची। कराची, यू नो, सीज, मेरा शहर है, आपका भी शहर है, हमें तकलीफ होती है, मतलब एज अ कराची आई, यू नो, वी हैड सच फॉन्ड मेमोरीज फ्रॉम कराची, और अब जाते हैं, हम खुद नहीं जाना चाहते। हमारे कराची वाले लाहौर, इस्लामाबाद मूव हो गए, या कहीं बाहर तो चले गए, और मैं बहुत भी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में शायद कम हो रही है, लेकिन हमारे पास तो नजर आ रहा है कि जब भी जाएं तो कम तो नहीं लगती। कितने कराची में लोग हैं जिन्होंने पूरा लांडी, कोरंगी या औरंगी टाउन देखा है? मैंने खुद नहीं देखा। 40 से 50 लाख लोग, हाँ। ना, चीज़ों पे सिर्फ यही लोग हैं, राइट। लियारी किसने लोगों ने देखा, राइट। तो यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, सिटी विच इज़ बिगर देन अ कंट्री एट टाइम्स, यू नो। बहुत ही ज़्यादती है कि मेरे शहर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑल्दो मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड, फेडरल ऑरेंज ट्रेन स्टार्टेड, यू नो, फेडरेशन शुड हैव इन्वेस्टेड, योर बिगेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ के साइट आप जाएं, आप जहाँ जो हमारा कितना एक्सपोर्ट करता है, कोरंगी इंडस्ट्री, रोड्स देखें, शर्म आती है, यू नो। आई थिंक लॉट हैज टू बी ब्लेम ऑन कराचीइट्स टू, चीज़ों पे। मैं तो हमेशा, मेरी थिंकिंग रही है, वाई ब्लेम अदर्स, अपनों पहले, यू नो, इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम लोगों ने क्या किया है, क्या किया। लेकिन हम भी, आई थिंक वी बिकम अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म एज वेल, लिविंग इन कराची, जो सच्ची बात है, जो जिसका मैं फर्म यकीन रखता हूँ। लेकिन फिर भी हमें सिस्टम के साथ रह के काम करना चाहिए, ना कि सिस्टम से आउट होकर। आई थिंक उर्दू स्पीकिंग, जिन्हें आप महाजिर कहते हैं, they would have, you know, Karachi would have gotten a better package if Karachiites would have, Mahajirs would have allied with a mainstream federal party than a regional ethnic party. Yes, which they have thought. जब वो पीटीआई आई थी तो वो एमक्यूएम के साथ उन्होंने यही कहा था कि अगर वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फेडरल के अंदर वो होंगे। और कराची को तो असली में देखें, जब कैपिटल था, कैपिटल जो जिन्ना ने बनाया था, वही अगर आपने ख़त्म कर दिया, तो जिन्नाश पाकिस्तान डाइड विद बांग्लादेश, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, और कराची में आपने कैपिटल ख़त्म कर दिया। कराची तो लावारिस जब से हो गया, तो आपने स्टेट ने फिर मतलब अलाउ किया ना कि एथनिसिटी, एथनो लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम बने यहाँ पे, क्योंकि स्टेट ने एकदम से वन फाइन डे जी कहा कि जी अब हमारा कैपिटल नहीं है। ये तो आपसे बैठ के बातें शुरू हो तो फिर ख़त्म नहीं होती, और ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स की। अब ये चैनल तो वैसे हमारा पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी पर है, लेकिन ऑफ कोर्स इतने एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन हो रही थी कि मैंने कहा कि और करते हैं। I would love to have you again. Absolutely. This time maybe at my place, and वहाँ पर फिर दोबारा से कोई बात करेंगे। I hope कि लोगों को ये समझ में आ रहा हो, जो हम क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है, probably they will come, हमारी कुछ इस तरह की ऑडियंस होगी जो आपकी तरफ से आएगी और वो देखेंगे इसको। And you are not as active as you before on social media. So I left Twitter because of. And you told me that I had over 100,000 and 150,000 you know, followers when I left Twitter. It had very you know, adverse effect on my mental health at that time, 2017-18. मैं engage ही नहीं कर पाता था, मैं काम करूँ या इसका करूँ, and the kind of negative comments, good it somehow said, you know, it was the biggest addiction of my life, and I said if I could, you know, get rid of that, I could, you know. So I got rid of that. I don't smoke, so that was my biggest addiction. उसके बाद to your viewers, you know, आज बहुत ही, मैंने भी फर्स्ट टाइम इस टाइप का कभी भी किसी से बात की, क्योंकि हम हमेशा पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा पॉलिटिक्स से बात की, that's another aspect, but
I think both is so closely चीज़ें मैं सिर्फ आखिर में एक ही मैसेज देना चाहता हूँ जो कोई भी आगे एक तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना मगर ये ना यू डोंट पुट योर एग्स ओवर डाइवर्सिफाई हो जाए डिसीजन मेकिंग आप कर लें क्विक डिसीजन मेकिंग एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर ना हाँ एंड नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट इज के यू नो वर्क लाइफ बैलेंस हाँ यू कांट सेक्रीफाइस वो बच्चे को पता मतलब ये ना हो कि बाहर काम करके आपको वापस आए चाचा कह रहे हैं तो that is thing that is something तो you know that 3 things if you can manage I know I had a luxury to do that but that's not impossible बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है and I'm sure we are going to have this conversation in future as well. Thanks for coming Ali bhai and I hope कि आपको भी वीडियो पसंद आई हो और if you whatever you think of please do write in the comment. Thank you very much Ali bhai. Thank you.